Hello everyone, this is the third lecture for unit number 2. In a previous class, we discussed about the various characteristics of DC series motor, DC shunt motor and DC compound motor. So in this lecture, we will study about the starting of DC motor and why we need a device known as starter for the DC motor. After this, we will move on. 2-point starter, what is it and how it is work. Next one is 3-point starter and 4-point starter. And the reference of this presentation. So in this presentation, we covered all these topics one by one. So let's start with starting of DC motor. So for starting a DC motor, we need a device known as the starter. A starter is a device to start and accelerate a motor. A controller is a device to start the motor, control and reverse the speed of the DC motor, and stop the motor. While starting the DC motor, it draws the heavy current which damages the motor. The starter reduces the heavy current and protect the system from damage. नॉर्मली स्टार्टिंग जब हम डीसी मशीन की करते हैं तो उस कंडीशन में डीसी मशीन का जो स्पीड होता है वो ज़ीरो होता है एट स्टार्टिंग, और वी कैन से दैट द बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू ज़ीरो. जब ईबी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो करंट को रोकने वाला उसमें बैक ईएमएफ ज़ीरो है, तो स्टार्टिंग में हैवी करंट फ्लो होता है. उस हैवी करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड अ डिवाइस नोन एज द स्टार्टर. So need of the starter for the DC motor. The DC motor has no back EMF. अभी मैंने आपको बताया starting of the motor, the armature current is controlled by the resistance of the circuit. The resistance of the armature is low, and when the full voltage is applied to the standstill condition of the motor, the armature current becomes very high, which damages the part of the motor. तो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है. स्टार्टिंग में करंट को अपोज करने के लिए केवल आर्मेचर रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट होता है जिसकी वैल्यू लो है, तो स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बहुत ही हाई हमें मिलता है और जो कि हमारी मशीन को डैमेज कर सकता है. तो इस करंट को हमें कम करना होता है एट स्टार्टिंग. सो वी नीड अ डिवाइस नोन एज स्टार्टर. Because of high armature current, the additional resistance is placed in the armature circuit at starting. The starting resistance of the machine is cut off the circuit when the machine gains its speed. The armature current of a motor is given by Ia is equal to V minus E divided by Ra, where Ia is equal to armature current, V is called the supply voltage or terminal voltage, E is called the induced voltage or back EMF, and Ra is called the armature resistance.
तो स्टार्टिंग के हाई करंट को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय यूजिंग द एडिशनल रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते जाते हैं और जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस कट ऑफ होता जाता है वैसे वैसे मशीन की स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है और इस तरीके से हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा जो बैक ईएमएफ ई है या ई बी हम इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। सो आई ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी अपॉन आर ए। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखते हैं। So IA depend upon E and RA if V is kept constant. When the motor is first switched on, the armature is stationary, hence the back EMF EB is also the 0. The initial starting armature current IAS is given by the equation so below. So IAS is equal to, उसी इक्वेशन को हमने आई ए की जगह एस लगा दिया है बिकॉज इसको स्टार्टिंग करंट हमने माना है। तो आई ए एस मीन्स स्टार्टिंग आर्मेचर करंट इज इक्वल टू वी माइनस ई, चूंकि हमारा बैक ई एम एफ ई की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, डिवाइड बाय आर ए। सो आई ए एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी अपॉन आर ए। और चूंकि आर ए हमारा जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कम होती है, लो होता है, स्मॉल वैल्यू होती है। Since the armature resistance of the motor is very small, generally less than 1 ohm, बहुत ही small होता है, 1 ohm से भी कम होता है, therefore the starting armature current IAS would be very large. For example, एक example से हम समझते हैं, if a motor with the armature resistance of 0.5 ohm is connected directly to a 230 volt supply, then by putting the value in equation number 2, we get starting current IAS is equal to V upon RA. The value of V is 230 volt and the armature resistance is 0.5. So the answer is 460 ampere. It's a very large current or very high current for starting. अगर इतना करंट हम मोटर को दे देंगे तो उसकी जो वाइंडिंग है या जो पार्ट्स हैं, वाइंडिंग बर्नआउट हो जाएगी और जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए वी नीड अ स्टार्टर। This large current would damage the brushes, commutator and windings of the DC motor. As the motor speed increase, the back EMF increase and the difference V minus E go on decreasing. This result in a gradually decrease of armature current until the motor attain its stable speed and the corresponding back EMF. Under this condition, the armature current reaches its desired value. Thus, it is found that the back EMF helps the armature resistance in limiting the current through the armature. Since at the time of starting the DC motor, the starting current is very large, at the time of starting of all DC motors, except for very small motors, an extra resistance must be connected in series with the armature. This extra resistance is added so that a safe value of the motor is maintained and to limit the starting current until the motor has attained its stable speed. The series resistance is divided into sections which are cut out one by one. As the speed of the motor rises and the back EMF builds up, the extra resistance is cut out when the speed of the motor builds up to its normal value, or we can say that its rated value. The next topic is 2-point starter. The 2-point starter is applicable for DC series motor starting.
और वी कैन से दैट कि जो डीसी सीरीज मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, और डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए वी कैन यूज 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर. Starter is a very basic, as shown in a figure. The start arm is simply moved towards right to start the motor. बहुत ही सिंपल है, इसमें राइट साइड मूव करती है जो हमारी स्टार्टिंग आर्म है या स्टार्ट आर्म जिसको बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, वो पहले 1 पे टच होगी. तो 1 पे जैसे ही कनेक्ट होगी तो सारा का सारा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में कनेक्टेड रहेगा. जैसे ही स्पीड या बैक ईएमएफ थोड़ा सा मोटर का बढ़ेगा तो जो आर्म है वो 2 पे शिफ्ट होगी, उतना रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएगा, देन 3 पे, देन 4 पे, देन 5 पे, और फाइनली सारा रेजिस्टेंस जो है इसमें कट ऑफ हो जाएगा जब मोटर अपनी प्रॉपर रेटेड स्पीड और डिजायर्ड स्पीड में रन करने लगेगी. Thus the maximum resistance is connected in series with the armature during starting and then gradually decrease as the start arm moves towards right. This starter is sometimes also called as a 2-point starter. इसको हम 2-point स्टार्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ही पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग आर्म वाला पॉइंट होता है और एक फील्ड टर्मिनल वाला पॉइंट होता है. क्योंकि डीसी मोटर में देयर इज 2 वाइंडिंग, वन इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग एंड अदर इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग. So in case of DC series motor, the field winding is connected series with the armature winding. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जो कि मोटर एम के फॉर्म में दिखाया गया है, फील्ड वाइंडिंग F1 F2 जो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो दिस मोटर इज कॉल्ड द डीसी सीरीज मोटर. सो इसमें टर्मिनल हमारे पास 2 रहेंगे, एक स्टार्टिंग आर्म का टर्मिनल रहेगा और दूसरा फील्ड टर्मिनल. चूंकि दिस स्टार्टर हैज 2 पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड द 2-point स्टार्टर. इसीलिए हम इसको 2-point स्टार्टर बोलते हैं. The no load release coil holds the start arm to the run position and leaves it when the voltage is lost. तो इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारे पास नो लोड रिलीज कॉइल एक दी हुई है. ये वाली कॉइल जो है आर्म को होल्ड करके रखती है जब तक इसमें वोल्टेज रहता है और सप्लाई रहेगी. जैसे ही वोल्टेज और उसके सप्लाई कम होती जाती है वैसे ही या लॉस्ट होता जाता है वोल्टेज, तो ये आर्म जो है वो फ्रीली वापस अपनी पोजीशन में चली जाती है. बहुत ही सिंपल फंडा है स्टार्टर का. स्टार्टिंग आर्म जो है वो पहले नंबर 1 रेजिस्टेंस पे कनेक्ट होगी. जैसे ही 1 पे कनेक्ट होगी तो सर्किट में सारा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेगा. क्यों, कैसे लिमिट करेगा? बिकॉज द रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज. तो रेजिस्टेंस का काम ही होता है करंट को अपोज करना. तो सबसे पहले नंबर 1 पे कनेक्ट होगा. जैसे ही मशीन की थोड़ी सी स्पीड और बैक ईएमएफ क्रिएट होगा तो जो स्टार्टिंग आर्म है वो सेकंड पोजीशन पे मूव हो जाएगा. मींस सेकंड और 1 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएगा सर्किट से. आफ्टर दिस जब मोटर की स्पीड फिर से थोड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि बैक ईएमएफ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो जैसे ही स्पीड फर्दर इंक्रीज होगी तो स्टार्टिंग आर्म जो है वो तीसरे नंबर पोजीशन पे पहुंच जाएगा और हमारा 1 से लेके 3rd तक का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट से कट ऑफ हो जाएगा. सिमिलरली 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा और फाइनली नो लोड रिलीज कॉइल के साथ अटैच हो जाएगा और सारा रेजिस्टेंस जो है वो कट ऑफ हो जाएगा. सो दिस इज अ बेसिक प्रोसेस टू स्टार्ट अ मोटर, DC series motor, by using 2-point starter. Now the next topic is 3-point starter. 3-point starter and 4-point starter basically used to start shunt motor.
or we can say that DC shunt motor. A 3-point starter is a device whose main function is starting and maintaining the speed of DC shunt motor. The 3-point starter connects the resistance in series with the circuit, which reduce the high starting current and hence protect the machine from damage. The 3-point DC shunt motor starter is shown in a figure. डायग्राम में देख सकते हैं 3-point starter का डायग्राम इसमें आपको दिख रहा है. इसमें 3 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, L टर्मिनल, F टर्मिनल एंड A टर्मिनल. एक्चुअली स्टार्टर में कुछ खास नहीं होता है. स्टार्टर में बस एक रेजिस्टेंस बहुत सारा जो है सेगमेंट्स में या पार्ट्स में कनेक्टेड होता है सीरीज में मशीन के साथ, और धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस कट ऑफ होता जाता है और स्पीड जो होती है मशीन की वो गेन होती जाती है, बढ़ती जाती है. सो द 3-point starter is consist of graded resistance R to limit the starting current. The handle edge is kept in the off position by a spring S. The handle edge is manually moved for starting the motor, and when it makes contact with resistance, stud 1, the motor is set to be in start position. In this initial start position, the field winding of the motor receives the full supply voltage, and the armature current is limited to a certain safe value by the resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. Now next is the working of 3-point starter. The starter handle is now moved from stud to stud, and this will up the speed of the motor until it reaches the run position. The studs are the contact point of the resistance. मीन्स 1 2 3 4 5 जो हम देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट रेजिस्टेंस की, उसको हम स्टड्स बोलते हैं. इन द रन पोजीशन 3 main points are considered. They are as follow. The motor attain the full speed. The supply is direct across both the windings of the motor. The resistance R is completely cut off.
handle edge is held in run position by an electromagnet energized by no volt trip coil, or we can say that in short NVC, no volt coil. This no volt trip coil is connected in series with the field winding of the motor. In the event of switching off or when the supply voltage falls below a predetermined value or the complete failure of supply while the motor is running, no volt coil is energized. The handle is released and pulled back to the off position by the action of the spring. The current to the motor is cut off and the motor is not restarted without a resistance R in the armature circuit. The no voltage coil also provides protection against an open circuit in the field windings. The no volt coil is called no volt or under voltage protection of the motor. Without this protection, the supply voltage might be restored with the handle in the run position. The full line voltage is directly applied to the armature. As a result, a large amount of the current is generated. The other protective device incorporated in the starter is the overload protection. The overload trip coil OLC and no volt coil NVC provide the overload protection of the motor. The overload coil is made up of a small electromagnets which carries the armature current. The magnetic pull of the overload trip coil is insufficient to attract the strip P for the normal values of the armature current. When the motor is overloaded, that is armature current exceeds the normal rated value, P is attracted by the electromagnet of the overload coil and close the contact AA'. Thus, no volt coil is short circuited, so in a figure of 3-point starter. As a result, the handle edge is released, which return to the off position and the motor supply is cut off. To stop the motor, the starter handle should never be pulled back, as this would result in burning the starter contacts. Thus, to stop the motor, the main switch of the motor should be open. Next topic is a drawback of 3-point starter. The following drawbacks of 3-point starter are as: the 3-point starter suffer from a serious drawback for motors with a large vibration of speed by adjustment of the field rheostat. To increase the speed of the motor, the field resistance should be increased. Therefore, the current through the shunt field is reduced. The field current may become very low because of the addition of high resistance to obtain a high speed. A very low field current will make the holding electromagnet too weak
to overcome the force exerted by the spring. The holding magnet may release the arm of the starter during the normal operation of the motor and thus disconnect the motor from the line. This is not a desirable action. So these are some drawbacks of 3-point starter. Hence, to overcome this difficulty, the 4-point starter is used. Next topic is a 4-point starter. A 4-point starter is almost similar in functional characteristics like a 3-point starter. In the absence of back EMF, the 4-point starter acts as a current limiting device while starting of DC motor. A 4-point starter also acts a protecting device. The basic difference in 4-point starter as compared to 3-point starter is that in this a holding coil is removed from the shunt field circuit. This coil after removing is connected across the line in series with a current limiting resistance R. Thus, studs are the contact point of the resistance represented by 1, 2, 3, 4 and 5 in a figure below. The schematic connection diagram of a 4-point starter is so big. Why it is called 4-point? Because in this starter we have the 4 points. The above arrangement forms 3 parallel circuits and they are as follow. So first is armature starting the resistance and the shunt field winding. Second one is a variable resistance and the shunt field winding. And third circuit is holding coil and the current limiting resistance. With the above 3 arrangements of the circuit, there will be no effect on the current through the holding coil. If there is any variation in speed of the motor or any change in a field current of the motor, this is because the 2 circuits are independent of each other. The only limitation or the drawback of 4-point starter is that it cannot limit or control the high current speed of the motor. If the field winding of the motor gets opened under the running condition, the field current automatically reduced to 0. But as some of the residual magnetic flux is still present in the motor, and we know that the flux is directly proportional to the speed of the motor, therefore the speed increase drastically, which is dangerous and thus protection is not possible. This sudden increase in the speed of the motor is known as high speed action of the motor. Nowadays, automatic push button starters are also used. In the automatic starters, the on push button is pressed to connect the current limiting starting resistor in series with the armature circuit. As soon as the full line voltage is available to the armature circuit, thus resistor is gradually disconnected by an automatic controlling arrangement. The circuit is disconnected when the off is pressed or off button is pressed. Automatic starter circuits
have been developed using electromagnetic contactors and time delay relays. The main advantage of the automatic starter is that it enables even inexperienced operator to start and stop the motor without any difficulty. So the next topic is reference. So these are the references: Electrical Technology by B.L. Thareja, electricaleasy.com, Electrical for You, and Circuit Globe, etc. So any doubt, anybody, please ask, and thanks for watching this video.